गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे पैरामेट्रिक इक्वेशन और उसके डेरिवेटिव की। कुछ हमने इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए। एक्सरसाइज 5.6 चल रही है, उसमें 1 to 6 एग्जांपल खत्म हो गए। अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 एग्जांपल नंबर 7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। यहां पे आप थोड़ा काम करके छोड़ नहीं सकते। देखिएगा इसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है। देखिएगा क्या करना है। यहां पे x इक्वल टू साइन क्यूब t अपन अंडर रूट कॉस 2t एंड y इक्वल टू कॉस क्यूब t अपन अंडर रूट कॉस 2t। मतलब कि x और y दोनों t की टर्म में है। मतलब यहां पे पैरामीटर जो है वो है t। तो हम डेरिवेटिव करेंगे x का और y का। सी हियर फर्स्ट, नाउ फर्स्ट फॉर x इक्वल टू साइन क्यूब t अपन अंडर रूट cos 2t। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x with respect to parameter that is t and therefore dx by dt. Here we use quotient rule, okay? And in quotient rule denominator, first denominator under root cos 2t as it is into derivative of numerator, that means derivative of sin cube t which is 3 sin square t into derivative of sin t which is cos t, okay, minus now numerator as it is, that means sin cube t as it is into derivative of denominator. See in denominator first outer function is root, then inner function is cos, okay, then first we derivative of outer function, that means we know that derivative of root x, that is 1 upon 2 root x, then here I write 1 upon 2 root cos 2t. Now into derivative of cos function which is minus sin 2t into derivative of 2t, that is see here in denominator square, that means square of root cos 2t, a square and square root cancel, then we get cos 2t. See here 2 cancel. Now I take LCM, then root cos 2t multiply with root, then root cancel, then here we get cos 2t into 3 sin square t into cos t minus plus sin cube t into sin 2t upon cos 2t into root cos 2t ओके। तो ये हमारा dx by dt खत्म हो गया। अभी थोड़ा आगे काम करना है, तो यहां पे लिख दो sin 2t इक्वल टू 2 sin t into cos t, लेकिन बाद में लिखेंगे। अब हम फाइंड करेंगे dy by dt। सी हियर एंड नाउ y इक्वल टू इन न्यूमरेटर cos cube t in denominator under root cos 2t. Now derivative of y with respect to parameter, that means with respect to t, then here dy by dt। खास ध्यान से देखते रहिएगा denominator, that means under root cos 2t as it is into derivative of numerator, that means derivative of cos cube t which is 3 cos square t into derivative of cos, that is minus sin t, okay. Now minus numerator, that means cos cube t as it is into derivative of denominator, that means derivative of root which is 1 upon 2 root cos 2t, okay, into derivative of cos function which is minus sin 2t into derivative of 2t, that is in denominator square, that means here root cos 2t whole square gives square and square root cancel, that means cos 2t. See here one time to cancel. Now I take LCM, then root cos 2t multiply with root, then root cancel, and root cos 2t multiply with denominator. Then see here
therefore dy by dt equal to root cos 2t multiply with root, then here only cos 2t. Second term is 3 cos square, then I write 3 cos square t. Next term is minus, then I write here minus sin t. Minus, see here, minus, and this minus which is plus, then here second term is positive, cos cube t, I write cos cube t into sin 2t, into sin 2t. In denominator cos 2t into under root cos 2t. तो ये हमारा dy by dt अब हमको मिल गया है. अब हम क्या करने वाले हैं, dy by dx. Now see here, dy by dx, then in numerator dy by dt, and in denominator we take dx by dt. We have to already find dy by dt and dx by dt. See here, dy by dx equal to in numerator minus 3 cos 2t into cos square t into sin t plus cos cube t into sin 2t in denominator cos 2t into under root cos 2t. Now in denominator dx by dt, that is 3 cos 2t, 3 cos 2t into sin square t into cos t, into cos t plus sin cube t into sin 2t, and in denominator cos 2t into under root cos 2t. See here, now denominator are same, then cancel. Now I convert this sin 2t into 2 sin t into cos t, which is our formula. Then in numerator minus 3 cos 2t into cos square t into sin t. See here, now we use formula of sin 2t, which is 2 sin angle half cos angle half, then cos cube t into 2 sin t, 2 sin t into cos t. Same in denominator, first term as it is, first term as it is, that means 3 cos 2t into sin square t into cos t plus now sin cube t as it is. Now we use formula of sin 2t, which is 2 sin t into cos t. See in numerator which term is common, one time sin t and one time cos t common, then sin t into cos t common from numerator, then here remaining term is minus 3 cos 2t. One time cos t already common, then one time cos t is remaining, sin t already common, plus 2 as it is, sin t into cos t common, then remaining term is cos cube t. Now in denominator, same here denominator, sin t cos t one time common, then sin t into cos t common, then here 3 cos 2t, cos t already common, and one time sin t common, then remaining term is one time sin t, plus here sin t cos t common, then 2 sin cube t. Sin t cancel, cos t also cancel. Now I convert this cos 2t into cos, and in denominator convert cos 2t into in terms of sin. ओके, तो न्यूमरेटर में जो cos 2t है उसको मैं कन्वर्ट करता हूं, लेकिन कौन सी टर्म में, cos की टर्म में, और डिनोमिनेटर sin की टर्म में कन्वर्ट करता हूं. तो फर्स्ट मैं लिख लेता हूं 2 cos cube t minus 3 cos t. Now I convert cos 2t into cos term, then 2 cos square angle half minus 1, which is our formula. Formula of cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. See in denominator 3. Now I convert this cos 2t in terms of sin, which is formula 1 minus 2 sin square angle half, okay, into sin t plus 2 sin cube t. Okay,
नाउ 3 cos t multiply with bracket. Okay, then here 2 cos cube t minus 3 2s are 6 cos cube t minus minus plus 3 cos t. Now see in denominator 3 1s are 3 minus 6 sin square t. Okay, now here plus, okay, multiplication of these two, that is 6 sin square t, and last term is 2 sin cube t. See here, I write first term 2 cos cube t minus 3 cos 2t into cos t minus 3 cos t as it is, and I convert cos 2t into 2 cos square t minus 1. Okay, here 3 as it is, I convert cos 2t into 1 minus 2 sin square t into sin t as it is plus 2 sin cube t. Now here 3 1s are 3 into sin t, then here term is 3 sin t. Next term minus 3 2s are 6 sin square into sin, that is sin cube t, and last term 2 sin cube t as it is. Now देखते रहिएगा यहाँ पे इक्वल टू, see here in numerator 2 minus 6, that is minus 4 sin cos cube t minus 4 cos cube t plus last term 3 cos t as it is, and in denominator minus 6 plus 2, that is minus 4 sin cube t, first term 3 sin t as it is, 3 sin t minus 4 sin cube t. Now common minus from numerator, then 4 cos cube t minus 3 cos t. See in denominator 3 sin t minus 4 sin cube t. Now we know that here 43, which is formula of cos 3 theta, then we write minus cos 3t. In denominator formula of sin 3 theta, that means sin 3t, then our answer is minus cot 3t. तो कुल मिलाकर ये सम बहुत ज्यादा अच्छा है, डेरिवेटिव बहुत इजी है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत बढ़िया है। एक सम में आपको घर पे देता हूं, वो है एग्जांपल नंबर 9। ओके, एग्जांपल नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.6। वहां पे x इक्वल टू a sec थीटा दिया गया हुआ है और y इक्वल टू b tan थीटा है। तो हमको फाइंड करना है dy by dx। Then first we have to find dx by d theta, and then we have to find dy by d theta, and then dy by dx। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन ये है वो बहुत बढ़िया है, डेरिवेटिव बहुत इजी है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम थोड़ा आगे काम करते हैं और वो सम है एक्सरसाइज 5.6 का 11, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मैं लिखता हूं, देखते क्या, तो मैं लिख देता हूं IMP रेस्ट 500 फॉर 2 मार्क्स। और ये सम बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैंने लिखा है IMP। ओके, ये बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया सम है, 2 मार्क्स में ये सम पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू अंडर रूट a रेज़ टू साइन इनवर्स t, y इक्वल टू अंडर रूट a रेज़ टू cos इनवर्स t, then we have to show that dy by dx equal to minus y by x. That means here we have to find dy by dx in terms of x and y, not in terms of parameter. Okay, मतलब t की टर्म में आंसर हम नहीं लाएंगे, हमको आंसर लाना है x और y की टर्म में। तो सेम मेथड है, यहाँ पे t पैरामीटर है, then first we have to find derivative of x with respect to parameter t, and then we have to find derivative of y with respect to t. Okay, first we dx by dt और dy by dt फाइंड करेंगे और उसके बाद खत्म dy by dx, और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। देखते हैं क्या करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूं x। नाउ
x equal to under root a raised to sin inverse t. Now derivative of x with respect to t. See here, first outer function is root and then inner function is a raised to sin inverse t. सबसे बाहर का जो फंक्शन है वो है रूट वाला, उसके अंदर जो फंक्शन है वो है a raised to x वाला, और उसके अंदर जो फंक्शन है वो है sin इनवर्स t. ओके, sin इनवर्स t. तो पहले हम डेरिवेटिव करेंगे रूट का. हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट x which is 1 upon 2 root x. Then I write 1 upon 2 root x, that means a raised to sin inverse t. Now derivative of a raised to x, and we know the derivative of a raised to x which is a raised to x into log a base e. Then here I write a raised to x, here x as sin inverse t, a raised to x into log a base e into derivative of power, that means derivative of sin inverse t, which is 1 upon under root 1 minus t square into derivative of t with respect to t, which is always 1. See here, a raised to sin inverse t whole raised to 1, and in denominator a raised to sin inverse t whole raised to half 1 by 2. Here function are same. ओके, तो यहाँ पे फंक्शन दोनों सेम है, डिवीजन में है, तो क्या करेंगे, ये फंक्शन अगर ऊपर जाएगा तो पावर का सबट्रैक्शन होगा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, a raised to sin inverse t whole raised to 1 by 2 into log a as it is, and in denominator remaining term is 2 into under root 1 minus t square. Okay, 1 minus t square. That means dx by dt हमको मिल गया. अब हम फाइंड करेंगे dy by dt. See here, and y equal to under root a raised to cos inverse t. तो यहां पे भी सबसे बाहर का जो फंक्शन है वो है रूट वाला, उसके अंदर जो फंक्शन है वो है a raised to x वाला, और उसके अंदर जो फंक्शन है वो है इनवर्स फंक्शन विच इज sin cos इनवर्स. तो देखते रहिएगा क्या करेंगे हम. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन, दैट मींस फर्स्ट विद डेरिवेटिव ऑफ y with respect to parameter t, then dy by dt equal to derivative of root which is 1 upon 2 root a raised to cos inverse. Now derivative of a raised to x which is a raised to x into log a base e, then a raised to cos inverse t into log a base e. Now derivative of cos inverse t, we know that derivative of cos inverse t which is minus 1 upon under root 1 minus t square. Same as above, here a raised to cos inverse t whole raised to 1 and upon under root a raised to cos inverse t, that is a raised to cos inverse t whole raised to 1 by 2. तो ये टर्म अगर ऊपर जाएगी तो पावर का सबट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 by 2, तो 1 minus 1 by 2 that is 1 by 2. तो न्यूमरेटर में टर्म आ जाएगी a raised to cos inverse t whole raised to 1 by 2 into log a. Now in denominator 2 as it is into under root 1 minus t square, and माइनस में आगे लिख लेता हूं, तो ये हमारा हो गया dy by dt. अब हम फाइंड करेंगे dy by dx जो कि बहुत ही इजी हो जाएगा. नाउ dy by dx, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे dy by dt and in denominator dx by dt. See here, in numerator dy by dt, that is minus a raised to cos inverse t whole raised to 1 by 2 into log a. Now in denominator 2 under root 1 minus t square. तो ये हमारा dy by dt हो गया, and denominator that is dx by dt. Then I write a raised to sin inverse t whole raised to 1 by 2 into log a as it is upon 2 under root 1 minus t square. तो यहाँ पे देखो कौन सी टर्म कैंसिल होगी, log a कैंसिल, 2 कैंसिल, root 1 minus t square also cancel. Then remaining term is here minus
in numerator a raised to cos inverse t whole raised to 1 by 2. That means under root a raised to cos inverse t. Same in denominator a raised to sin inverse t whole raised to 1 by 2. Then I write this term in denominator and in under root a raised to sin inverse t. But we know that root a raised to cos inverse t, which is y, and in denominator which is x, then we get dy by dx equal to minus y by x. तो ये सम हमारा खत्म होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है फॉर 2 मार्क्स, खास याद रखिएगा और ये सम कंप्लीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सम में लेता हूं जो कि है एग्जांपल नंबर 8, ओके, एक्सरसाइज 5.6 का 8 नंबर का सम। उसमें भी हमको 2 फंक्शन दिए गए हुए हैं और दोनों है पैरामेट्रिक इक्वेशन, ओके। तो पहला हमारा x इक्वल टू है a ब्रैकेट log tan t/2, सॉरी, तो पहली टर्म यहाँ पे थोड़ा क्या है, cos t है, तो पहली टर्म है cos t और दूसरी टर्म है log tan t/2, log tan t/2, और y इक्वल टू दिया गया हुआ है a इंटू साइन t, ओके, y इक्वल टू a इंटू साइन t। तो यहां पे x है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन y जो कि बहुत ही इजी है, और x एंड y दोनों पैरामीटर t की टर्म में दिए गए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले dx by dt फाइंड करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड dy by dt एंड देन dy by dx। See here, now I start from x equal to a bracket cos t plus log tan t/2। तो पहले हम फाइंड करेंगे dx by dt, therefore dx by dt equal to a bracket derivative of cos, which is minus sin, plus now derivative of log function, here outer function is log and then inner function is tan, then first derivative of log function which is 1 upon x, here x as tan t/2, now derivative of tan t/2, and in tan t/2 outer function is tan and at that time inner function is t/2, and we know the derivative of tan function. Derivative of tan function is sec square t/2, then I write sec square t/2 into derivative of t/2 which is 1 by 2, okay, then here a as it is minus sin t plus, now I convert all function into sin and cos, then here 1 by 2, these two as it is. We know that tan function, that means sin upon cos, then I write tan t/2 equal to sin t/2 upon cos, taking numerator, then cos t/2, now sec square which is 1 upon cos square t/2, okay. See here, one time cos function cancel, then here a bracket minus sin t plus 1 upon 2 sin t/2 into cos t/2, and we know the formula 2 sin theta cos theta, that means sin angle double, and here I write a bracket minus sin t plus 1 upon sin t. Now I take LCM, sin t multiply with minus sin t, then here a, here minus sin square t plus 1 upon sin t. See numerator 1 minus sin square, and 1 minus sin square we know that 1 minus sin square is cos square t, then our dy dx by dt is a cos square t upon denominator sin t। तो ये हमको dx by dt मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे dy by dt एंड y जो कि बहुत ही इजी है a sin t। Now derivative y with respect to t, that is dy by dt a as it is, and we know the derivative of sin function is cos t. Now last we have to find dy by dx, then now dy by dx,
then in numerator I write dy by dt, that is a cos t, and in denominator I write dx by dt, that is a cos square t, a cos square t upon sin t. One time a cancel, now sin t take in numerator, then cos t into sin t, in denominator cos square t. Cos t one time cancel, then remaining term is sin t upon cos t, which is tan t, and that is our answer, that is our dy by dx, जो कि बहुत ही इजी है। ये खास इसमें खास काम करना है यहाँ पे, जो ये फॉर्मूला का यूज करना ना भूले। ओके, बाकी तो सब इजी है। ओके।